हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लीव नॉट डू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है, कब पे दी जाती है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू तो ये बोलता है कि सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय or quasi permanent employee other than a military officer, limited to a maximum of 360 days during the entire service on medical certificate, subject to the following condition। यानी मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको आपकी इंटायर सर्विस में 360 डेज का लीव नॉट ड्यू लीव सेंक्शन की जा सकती है। पहला कंडीशन, द अथॉरिटी कंपटेंट to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expiry. Second, leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter। यानी आपकी जो ज्वाइनिंग के बाद में HPL जो होंगी उनके अकाउंट के ऊपर। थर्ड वन, लीव नॉट ड्यू shall be debited against the half pay leave the government servant may earn subsequently। Leave not due may also be granted to such of the temporary government servant as are suffering from TB, leprosy, cancer or mental illness for a period not exceeding 360 days during entire service, subject to fulfillment of condition in the clause even above जो थे, subject to the following conditions, namely that the government servant has put in a minimum of 1 year सर्विस। यदि जो बंदा टेम्परेरी है, यदि वो 1 साल का सर्विस कर लिया है तो उसको भी 360 डेज की लीव नॉट ड्यू सेंक्शन की जा सकती है। दैट द पोस्ट एंड सेकेंड वन, दैट द पोस्ट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव इज likely to last till his retirement to duty, and that the request for grant of such leave is supported by a medical certificate as envisaged in clause C and D of sub-rule 2 of Rule 32. Second, where a government servant who has been granted leave not due resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the leave not due shall be cancelled, his resignation or retirement taking effect from the date on which such leave had commenced, and the leave salary shall be recovered. Where a government servant who having availed himself of leave not to return to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently, provided that no leave salary shall be recovered under clause A if the retirement is by reason of ill health, incapacity of the salary shall be recovered under clause A or clause B if the government servant is compulsorily retired prematurely under Rule 48 Pension Rule 1972 or is retired under Fundamental Rule 56 rules। तो ये आपका LND वो खत्म। इसमें हम जानेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये एक्सल क्या होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन एबिलिटी सर्विस इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस when no other leave is admissible, when office other leave is admissible but the government servant applies in writing for the grant of extraordinary leave, unless the president in view of the shall be granted anyone application in excess of the following limits। यानी प्रेसिडेंट के ही दखल देने पर इनके इससे ज़्यादा दिनों की ये एक्चुअल ग्रांट की जा सकती है, जैसे 3 months, 6 months where the government servant has completed 1 year service।
6 मंथ्स। यदि एक बंदा जो 1 साल सर्विस कर लिया है उसको 6 महीने की एक दी जा सकती है, विद बशर्ते है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में अटैच करे। 18 months where the government servant who has completed 1 year's continuous service is undergoing treatment for pulmonary tuberculosis by any other part of the body by a qualified tuberculosis specialist, leprosy, कैंसर और फॉर मेंटल इलनेस, इसके ट्रीटमेंट के लिए। और नेक्स्ट आता है 24 मंथ्स यानी स्टडी लीव के लिए, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी लीव है तब। और थर्ड वन है वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्शनरी लीव इन रिलैक्सेशन ऑफ द, यानी यदि बंदा जाता है उसको तो उसको बॉन्ड भरना होता, बॉन्ड इन फॉर्म 6 undertaking the refund to the government the actual amount of expenditure incurred by the government servant during such leave plus that incurred by any other agency with interest thereon in the event of which not returning to duty on expiry of such leave or quitting the service for a period of 3 years। इस किसी बंदे को 24 मंथ्स का एक्सोल दे दिया गया है स्टडी लीव के लिए, यदि वो 3 साल से पहले सर्विस होता है तो जो भी खर्चा हुआ वो उसको वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और ये रहा ओवरऑल LND एंड लीव नॉट ड्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये एक्चुअल प्रोसीजर। तो लगता है कि को कुछ यूज रहेगा इसका, देखते रहिए और पूरा यूज कीजिए इस चीज़ों का। थैंक यू।